हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट। सो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 23 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर जी.डी बिस्ट वॉल्यूम 1। सो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सर कॉमा इट इज एडमिटेड बाय ऑल सेक्शंस इट इज एडमिटेड बाय ऑल sections of this house and the other houses of this house। इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑफ दिस हाउस इस तरीके से भी लिख सकते हैं, हाउस एंड द अदर हाउस एंड द इकट्ठा डालेंगे, एंड द अदर हाउस एज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिल, एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इकट्ठा लिखेंगे, बिल वेरी इंपॉर्टेंट बिल इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम। एंड कॉमा ऑर्डिनरली इसको बनाएंगे, ऑर्डिनरली कॉमा ए लॉ of this sort would receive appreciations at least from this section, एक साथ भी लिख सकते हैं पूरा, और from this section अलग अलग भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। of the house और ऑफ द हाउस इस तरीके से भी लिख सकते हैं। पर फ्रेंड्स आप कोशिश करिएगा कि आप ऑफ द हाउस इस तरीके से लिखें। जितने ज़्यादा आप शॉर्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करोगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी होगी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट चलते हैं, ऑफ द हाउस फुल स्टॉप इसके बाद, ठीक है, ये आगे फुल स्टॉप। नेक्स्ट है, बट आफ्टर लुकिंग थ्रू द प्रोविजंस ऑफ दिस बिल, इसको हम लिखेंगे बट आफ्टर लुकिंग through the provisions of this bill इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ऑफ दिस बिल अलग अलग भी लिख सकते हैं, ऑफ दिस बिल इस तरीके से भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। ऑफ दिस बिल, अच्छा, प्रोविजंस ऑफ दिस बिल एंड आल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसीडिंग एंड आल्सो गोइंग, ठीक है फ्रेंड, एंड आल्सो गोइंग थ्रू द प्रोसीडिंग्स, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, गोइंग थ्रू द proceedings and also witnessing the honorable minister's speech who piloted the bill in the other house, as also the opinions expressed by फ्रेंड्स ये ओपिनियंस है, इस तरीके से बनाएंगे, ओपिनियंस expressed by him in the various forums which I have heard of, comma I do not think फ्रेंड्स, I do not think हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, I do not think, ठीक है फ्रेंड्स, I do not think that this can under any stretch that this can इस तरीके से लिख सकते हैं, under any stretch of imagination comma be called nationalization at least as far as
एज फार एज को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एज फार एज आई कैन अंडरस्टैंड इट, आई कैन अंडरस्टैंड इट। फ्रेंड्स, आई कैन अंडरस्टैंड इट को हम कोशिश करेंगे फुल फ्रेज में लिखने की, आई कैन अंडरस्टैंड इट। ठीक है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड इट इसके साथ चाहे लिख लीजिए, चाहे आप इसको थोड़ा मैं काट के इस तरीके से बनाता हूँ, इस तरीके से आई कैन अंडरस्टैंड इट सेपरेट भी लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसके दो पोर्शन। नेक्स्ट है फुल स्टॉप पैराग्राफ चेंज। सर आई एम अवेयर दैट द गवर्नमेंट, सर कॉमा आई एम अवेयर दैट द गवर्नमेंट, इसको नीचे इसके लिखेंगे, दैट द गवर्नमेंट ट्राइज टू ग्रैब, ट्राइज टू ग्रैब, ठीक है, tries to grab itself with ideas and words comma which mean something else, which mean something else। समथिंग एल्स को पूरा लिख सकते हैं आप इस तरीके से, समथिंग एल्स एक ही फ्रेज में, समथिंग एल्स सो दैट इट कैन प्रूव इट्स, सो दैट इट कैन प्रूव इट्स प्रोग्रेसिव, इट्स डिफरेंशिएशन के लिए नीचे डॉट लगा लीजिएगा, प्रोग्रेसिव nature and it may also say, nature and it may also say to the world and to the country, to the world and to the country also that they are about to, also that they are को above the line इस तरीके से लिख सकते हैं हम, ग्रामर होगा ये और फ्रेज भी है ये, they are also they are about to usher, about to usher in a socialist state, in a socialist state, comma welfare state, welfare state, comma a cooperative, कोऑपरेटिव को आसानी से इस तरीके से लिख सकते हैं हम, और पूरा अगर लिखना हो तो फिर कोऑपरेटिव ये पूरा इस तरीके से बनेगा। कोशिश कीजिएगा आप शॉर्ट वे यूज करने की, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड वट एवर else other phrases, else other phrases may mean full stop। Next, it shall be my endeavor, it shall be my endeavor today to attempt to prove that, to attempt to prove that the government इकट्ठा लिख लेंगे, is quite entitled to call it nationalization, but as far as I know, I do not think that I shall agree, to its taking credit, to its taking credit in this manner, full stop। But there are certain principles of nationalization, full stop, by merely calling anything nationalization, it does not become nationalization, full stop। There are certain principles, full stop। What are those principles? Paragraph change। Firstly, you must prevent any private exploiter, any private exploiter
इस तरीके से बनाएंगे इसको, इस तरीके से बना सकते हैं आप एक्सप्लॉयटर, इस तरीके से बना सकते हैं एक्सप्लॉयटर फॉर प्राइवेट बेनिफिट, फॉर प्राइवेट बेनिफिट स्पेशली इस तरीके से भी बना सकते हैं और स्पेशली को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इन एन इंडस्ट्री एसेंशियल, इन एन इंडस्ट्री एसेंशियल फॉर ए वेरी लाइफ, फॉर ए वेरी लाइफ एंड वेल बीइंग ऑफ द सोसाइटी, एंड वेल और बीइंग इकट्ठा लिखेंगे, ऑफ द सोसाइटी भी इसके साथ इकट्ठा लिख लेंगे इस तरीके से, फुल स्टॉप। इन दिस केस दैट प्रिंसिपल डज नॉट अराइज, इन दिस केस इकट्ठा लिखेंगे, दैट प्रिंसिपल डज नॉट, इसको अच्छे से लिखेंगे, डज नॉट अराइज इस तरीके से, डज नॉट अराइज because in most cases, these business houses are not making profits in the normal sense, profits in the normal, इस तरीके से बना लेंगे हम, normal sense of the term profits, ये full stop. There are other dubious, there are इस तरीके से बनाएंगे, other dubious ways of making profits, which most of these business इस लिखेंगे proprietors इस तरीके से लिखेंगे, proprietors, managing agents इस तरीके से, knows of comma I do not refer to them, full stop, paragraph change. Last para है, the other principle is that when you take over the other, इस तरीके, the other principle is that when you take over इकट्ठा इस तरीके से लिख सकते हैं, अलग अलग इस तरीके से, take over, comma you shall not let the society suffer by way of giving more facilities to the business houses, full stop. That is comma you take over something which is more or less, अलग अलग इस तरीके से लिखोगे, इकट्ठा इस तरीके से लिखोगे, more or less derelict इसको लिखेंगे हम derelict, more or less derelict, and pay something exorbitant इस तरीके से, exorbitant at the expense इस तरीके से बनाएंगे, expense of the society इकट्ठा लिख लेंगे इस तरीके से, full stop, close. फ्रेंड्स, ये था हमारा शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 23 फ्रॉम द मैगजीन स्पीडोग्राफी बाय डॉक्टर G.D Bist. आई होप कि आपको ये शॉर्ट हैंड ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से समझ आई होंगी, इसकी अल्टरनेटिव फ्रेजेस, अल्टरनेटिव आउटलाइंस, शॉर्टकट वे में, लॉन्ग कट वे में किस तरीके से बनाना है, सब आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी इसमें अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं।
या मेरा टेलीग्राम चैनल है जेके शॉर्ट हैंड प्लेनेट, उसके ऊपर आप अपना डाउट, अपनी क्वेरी मेरे से पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। और फ्रेंड्स, इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दूंगा, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, और पीडीएफ वहां से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।